Hope you will be fine. So welcome back to my YouTube channel. Guys, today I am here with a new video with a new topic. Such a topic which is destroying the humanity. Such a topic which is destroying the society and our youth. Guys, the topic is drug addiction. I will explain it from the top till the bottom. I will tell you each and everything about drug addiction, how they involve and how they can be the victim of that addiction. So here I will be speaking two languages, English and Urdu, so that my audience who doesn't understand and who doesn't know English must take advantage from this video. देखिए, जो लोग नशा जैसी वबा में मुब्तला हैं वो अपने आप को मौत के कुएं की तरफ धकेल रहे हैं, वो अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। आज हम इस बिना पर बात करेंगे कि एक आम आदमी किस तरह नशा की तरफ गामेज़न होता है, किस तरह एक नशेई बन जाता है। एक आम सा आदमी, उसमें तालिब इल्म भी हो सकता है, एक एजुकेशनिस्ट भी हो सकता है, एक अच्छा खासा आदमी भी हो सकता है। माय डियर व्यूअर्स, how a common man became the victim of drug addiction. See that here the society matters a lot, that you belongs from which society. For example, if you belongs a bookish society, such a society from your family members to your friends, everyone is the reader, everyone is the bookish person. So it is my claim that it is impossible that you will be an addict or you will be a friend of addiction who like drug addict. दूसरी जानिब ये कि एक ऐसा माशरा जहां आपकी सुबह एक सिगरेट के कश से हो, तो ये मेरा दावा है कि आप कितनी ही डिग्री याफ्ता क्यों ना हो, आप कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, एक दिन आप भी वो करेंगे जो आपका माशरे में हो रहा है। एक दिन आप भी उस कदम पर, नक्शे कदम पर चलेंगे जो आपके माशरे में हो रहा है, जो आपके लोग, आपके दोस्त कर रहे हैं, एक दिन आप भी वो करेंगे। So it is obvious that you can be deteriorated from this society. If you belong to such a society, so my suggestion is that kindly and please avoid yourself to sit with them, otherwise it will be too late. दूसरी जानिब ये कि कतरे कतरे से समंदर बनता है, तो इंसान छोटे छोटे नशों से बड़े पैमाने पर आ जाता है, तो उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है और वो इंसान अपने आप को पहचानने से बहुत दूर चला जाता है और वो अपने आप पर दोबारा लौट कर नहीं आता। तो वो अपने आप को पहचानने से बहुत दूर चला जाता है कि वो पहले कैसा था, अब कैसा है। तो उस वक्त क्योंकि बहुत देर हो चुकी होती है, तो इंसान अपने आप को पहचान नहीं पाता। Now let's move towards their lives that how the drug addictions are running their lives. My dear listeners, I observed that how the drug addictions are running their lives. They are running an unconscious life where they don't know anyone else, where they don't know even themselves, where they don't know even their family members and their friends, where they are busy with the puffs of cigarettes, where they are busy with drugs. They even joined the gangs of thieves and robbers and became thieves and robbers in the society. I request to the government that government must ask this fastidious issue, this fastidious challenge, because it is becoming a culture in our society. Thank you for watching us and thank you for listening us. Thank you so much.